On Friday, men in khaki came under attack of rioters and pelters in Ranchi. More and more proof is now emerging, which is throwing up complete picture. As Times Now accesses footage both from CCTVs and mobile phone footage that was shot by bystanders, the truth is unraveling and becoming clear. We piece it together for you. Take a look at this report. Violence, vandalism and arson witnessed on the streets of Ranchi on June 10th. Policemen were ambushed, mercilessly attacked by pelters. But that is not all. At least 3 temples came under attack of these rioters who not only pelted stones but even resorted to hurling what looked like crude bombs. The mob ran riot at the Sankat Mochan temple and the Surya Mandir. At the Mahavir temple, stones were pelted during the day, and then some rioters returned past midnight to hurl crude bombs. Protesters here carried out the petrol bomb attack, and that was thrown. If we go inside, we can clearly show you the visuals of the petrol bombs which was thrown inside this temple, and there have been evidences of that as well. 3 to 4 petrol bombs were thrown here, and if we can see on this particular wall, this is the black mark where probably the petrol bomb would have been thrown, another on the right, and these are the bottles which was used probably for making the petrol bomb visible. Outside the Mahavir temple, we saw tens of people running around with stones, hurling them at perhaps the policemen who were chasing them. They even hurled those stones inside the temple complex. Here is a sense of what the area looks like now. Temples were under attack on the day of protest. It was Sankat Mochan temple at the main road in Ranchi where the protest broke out, and this is another temple where I am standing here. This is Mahavir Mandir in Hindpidi. This is just 500 meters away from that particular temple and main road where the protest broke out. And there you can see at this temple as well, there were petrol bombs which were thrown, and they tried to also vandalize the idol over here of Mahavir temple, which is rightly situated just 500 meters away. There were posters which were teared up outside the temple. Those who were meant to maintain law and order were the first targets of these rioters. Top officers like the SP and SSP were among those who were grievously injured. रोड़ा पूरा बिक रहा था, मंदिर पर रोड़ा बिक रहा था, तोड़ पार कर रहा था। हमने शांत कर रहे थे कि शांत हो जाए, इसी तरह से किए कि नहीं माना, और बाजी उन्हें से फिर फायरिंग होने लगा। तब फायरिंग तो हमने फिर फायर किए हैं, बाद में फायर किए हैं, मगर बाद फिर हमको लगा, गोली लगा, फिर हम चल आए, पर हॉस्पिटल चल आए। भीड़ में थोड़ा पता लगा रहा, थोड़ा सबके नाम जान रहे थे कि उनको लगा कि चोट करीब सब करीबन के लगा है, कोई महिया लगा, कोई देह में लगा, अभी उसको भी उनको भी देह में लगा है। पहले तो जुलूस किया, थी नारा लगाया, और बाद धीरे धीरे अपना इकट्ठा किया होगा, बाद में भीड़ थोड़ा पता लग रहा था, पूरा भीड़ में था। जैसे फायरिंग किया तो हमने भी फायरिंग, आसमानी फायरिंग की, आदेश मिला था। It is clear as day that the intention of these culprits was to cause harm, but for some, those who were killed when the police opened fire are martyrs. A spine-chilling SOS from a person who was at the receiving end of the rioters' wrath shocked the country, but for Jamaat-e-Ulema-e-Hind, they are the ones who are responsible for mayhem. देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छूट जाइए, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर, देखिए अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। डीआईजी साहब से बात की है कि जिस तरह से बर्बरियत बढ़ती गई है, पुलिस के जरिए से उसकी भी जांच हो, और आपके ज़रिए से, चूँकि आप अच्छे अधिकारी हैं, आपके ज़रिए से जो लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं उनके वरसा को, उनके घर वालों को सही मुआवजा मिले, और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और वाकई जो कसूर
उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बेजा किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मुल्क में और भी जगहों पे हालात पैदा हुए, लेकिन जिस तरह से रांची में हादसा हुआ, इससे सिर्फ रांची नहीं, झारखंड नहीं, पूरे मुल्क में बड़ी बदनामी हो रही है, जो इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। वो नहीं होना चाहिए था। रोकने के और बहुत सारे तरीके हैं, रोका जा सकता था, लेकिन अचानक गोली चला दी गई और इस जमहूरी मुल्क के ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, ये बात मुनासिब नहीं है। 2 days and 25 FIRs later, the state is yet to make even one arrest in the case. Ranchi police at the receiving end of some tough questions, given that in Uttar Pradesh over 300 have been arrested in the same span of time. हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, इन नहीं हुआ है। मैंने आपको ये भी कहा, हम जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ बोलेंगे, वो साक्ष्य आधारित होगा। फिर मैं एक चीज बता दिया, जो ऑलरेडी बोल चुका हूँ बिना क्वेश्चन आए, कि इन्वेस्टिगेशन में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, वो कहीं के भी हो, किसी स्वरूप में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। You have seen the damage, but unfortunately there is not much to see in terms of action. What explains the go slow in this case? Well, we hope the Soren government comes out and explains. With Aishwarya in Ranchi, Bureau Report, Times Now.